सचिन नामे ईगल आई ट्यूटोरियल में आप सबका और एक बार स्वागत करता हूं। एंड डिफरेंशिएशन के आज के लेक्चर में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो डिपेंड होगा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हमने डिफरेंशिएशन के स्टडी किए हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस डिफाइन किए हैं और उसके वैल्यूज फाइंड किए। एंड सेकंड लेक्चर में हमने कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन स्टडी किए। अब ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन लेके हम फर्स्ट प्रिंसिपल के कुछ क्वेश्चंस प्रूव करने जा रहे हैं, जिसमें जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फंक्शन है x इंटू साइन एक्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से x का सेपरेट डेरिवेटिव फाइंड किया था कि डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos x। बट यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शन का डेरिवेटिव बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। तो इसमें अभी हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे इसे डिफाइन करेंगे कि लेट द वैल्यू ऑफ f of x is x into sin of x, and we know that in definition there is x plus h is first term, and therefore we take this x is replaced by x plus h, means x is some increment। तो यहाँ पे हम लेंगे कि let h be a small increment and therefore this x is replaced by f of x plus h and is equal to x plus h into sin of x plus h, means this x is replaced by x plus h on left hand side, so right hand side also this x is replaced by x plus h. And then by definition of first principle, we know that the value of the derivative means ddx of this f of x is equal to limit of h tends to 0 and f of x plus h minus of f of x divided by h. And the value of this function f of x is x into sin x, so ddx of x into sin of x is equal to this limit of h tends to 0 and f of x plus h is x plus h into sin of x plus h, and minus value of f of x is x into sin of x whole divided by h. And limit of this x h tends to 0, in this term we can multiply sin x plus h by x and then plus h. So first multiply by x, so x into sin of x plus h and plus h into sin of x plus h minus of sin x into sin of x and whole divided by h. अब यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें जो टर्म्स है ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, जिसमें से फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में x हम कॉमन ले सकते हैं। सो इन नेक्स्ट स्टेप वी टेक x एज कॉमन फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस ddx ऑफ x into sin of x is equal to limit of h tends to 0, take x as common, so x into in bracket sin of x plus h minus of sin x, and remaining term is h into sin of x plus h, so plus h into sin of x plus h and whole divided by h. And now use one standard formula of trigonometry. Formula is sin c minus sin d. So we know that the standard formula for sin c minus sin of d is 2 times cos of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2 is a standard formula of sin c minus sin d. So use this formula, and therefore the ddx of x into sin x is equal to limit of h tends to 0 x into in bracket sin of c minus d, means 2 times cos of, here value of c is x plus h is c, then plus d by 2,
here consider d as x, so x by 2 and into sine of c minus d means x plus h minus x divided by 2 and plus remaining term is h into sine of x plus h and whole divided by h and is equal to limit of h tends to 0 x into this 2 times cos of x plus x is 2x plus h by 2 into sine of x get cancelled, so h by 2 plus h into sine of x plus h and whole divided by h। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो टर्म है इसमें x कैंसिल हो रहा है, रिमेनिंग है h बाई 2 एंड ये जो टर्म है ये कंप्लीट टर्म है जिसमें ये एक फॉर्मूला अप्लाई किया है एंड प्लस ये सेकंड टर्म है। नाउ दिस h इज डिवाइडेड टू बोथ द टर्म्स, ये एक टर्म एंड प्लस ये सेकंड, जैसे a प्लस बी बाय सी है तो हम यहाँ पे a बाय सी एंड प्लस b बाय सी यहाँ पे ले सकते हैं। सो इन नेक्स्ट टर्म लिमिट ऑफ दिस h टेंड्स टू 0, x into 2 means 2 times x into cos of this 2x by 2 is x and plus h by 2 into sine of h by 2 and divided by h। अब इसमें ये जो h है ये पूरे टर्म को एक h डिवाइड होगा एंड देन प्लस दिस h इज डिवाइडेड टू सेकंड टर्म मीन्स h into sine of x plus h and divided by h। तो ये कंप्लीट फंक्शन को हमने लिमिट अप्लाई किया है, यहाँ पे ये पूरे फंक्शन को डिवाइडेड बाय h एंड प्लस सेकंड फंक्शन को डिवाइडेड बाय h एंड वी नो दैट दिस sin h by 2 by h by 2 is 1 and therefore we adjust this denominator limit h tends to 0 2x into cos of x plus h by 2 into sine of h by 2 divided by h by 2 so multiplied by 1 by 2। तो यहाँ पे हमने ये लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन अप्लाई कर लिया है देन प्लस दिस h कैंसल एंड लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 दिस साइन ऑफ x प्लस h। तो यहाँ पे हमने दो टर्म को सेपरेट कर दिया है एंड नाउ अप्लाई द लिमिट, सो 2x into cos of x plus 0 and into sin h by 2 divided by h by 2 is 1 into 1 by 2 then plus sine of x plus value of h is 0 and is equal to 2x into cos of x plus into 1 into 1 by 2 is 1 by 2 plus sine of x plus 0 is x and here this 2 get cancel and is equal to value is x into cos of x plus sine of x and therefore we get the derivative of ddx of x into sin x is equal to x into cos x plus sin x। So we get the derivative of x into sin x is equal to x cos x plus sin x by using the first principle। So students कल हमने ये जो questions है जो जिसे हम बोल सकते हैं कि multiplication और the product of two functions, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का एक कल हमने रूल पढ़ा था कि व्हेन द फंक्शन इज इन प्रोडक्ट देन वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव बाय वन रूल इज ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन into second function and value is first function into derivative of second plus second function into derivative of first and by using this formula means rule of differentiation by product rule we can find the derivative of two function when the functions are in multiplication means product। So if we use this product rule directly to the given function means derivative or ddx of x into sin x, जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है x into sin x, सपोज ddx of x into sin x हम यूज करेंगे इसमें x is a first function and sin is a second function and now apply this formula, so first is x and ddx of sin x is a second function plus second is sin x and into ddx of x and we know that जब भी इसमें हम
प्रोडक्ट रूल लेते हैं तो फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई टू ओनली डी डी एक्स टर्म्स, जहाँ पे डी डी एक्स है उसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 and is equal to x into cos of x plus sin x into 1 is sin x, and therefore we say that the ddx of this x into sin x is equal to x into cos of x plus sin of x। तो हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है कि जिसमें डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स का वैल्यू है एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बट सेम ये जो रिजल्ट है हमने यहाँ पे फाइंड किया है डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स इज एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बट बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमने फर्स्ट लेक्चर में भी ऑलरेडी स्टडी किया है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन है जिसका हमने जो प्रूफ किया है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रोसीजर इज सेम बट फंक्शन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन। तो इसमें सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करना है कि पहले फंक्शन को डिनोट करना है एफ एक्स, देन दिस एक्स इज रिप्लेस बाय एक्स प्लस एच ऑन बोथ साइड, अप्लाई द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल and then put the values of f dash x and f x and then multiplied this x to sin x plus h and then plus h multiplied to sin x plus h and take x as common from first and third term and apply the formula of sin c minus sin d and then divide the terms by h, and by using one formula sin h by 2 by h by 2 is 1, and now lastly substitute the value of h is 0, we get the derivative of x into sin x is equal to x cos x plus sin x by using first principle. So students, we have already proved the derivative of x into sin x by using first principle in first question, but here we have to find the value of f dash of pi, but the function is same. Here the function f of x is equal to x into sin of x, but to find f dash of pi we have to replace this x by pi, and therefore the value of f of pi is equal to pi into sin of pi. But we already know that the value of sin of pi means sin 180 is 0, and therefore the value is pi into 0 is equal to 0. But by using the definition of first principle, value is limit of h tends to 0 f of x plus h minus fx by h. So here f of x is f of pi, तो इसमें से एक वैल्यू यदि f of pi है तो उसकी सेकंड वैल्यू होगी f of pi plus h, and therefore or let we have to replace this pi by pi plus h, and this h is a some small increment in pi. So let h be small increment in pi, and therefore this f of pi plus h and is equal to pi is replaced by pi plus h into sine of pi plus h, and the value of this pi plus h, pi means in two-dimensional geometry 0 pi by 2 and pi 3 pi by 2 and 2 pi. So pi is 180 and pi plus something means this trigonometric function lies in the third quadrant, and in third quadrant tan is positive so sine is negative, and therefore pi plus h into this sine is negative, and for pi and 2 pi ratio does not change, so value is sine of h. So here sine of pi plus h, value of this sine of pi plus h and is equal to minus of sine h, and is equal to minus of this pi plus h into sine of h. And by definition of first principle of derivative, by definition of first principle, the value of this ddx of fx, or we can say that f dash of x, but here the value of x is replaced by f pi, and therefore ddx means derivative of x, यहाँ पे हम बोलेंगे pi, यहाँ पे हम जो कंसीडर करेंगे वो फंक्शन होगा
pi. So डी डी एक्स ऑफ पाई एंड एफ डैश ऑफ पाई इज इक्वल टू, ये दोनों का मीनिंग सेम ही होता है. एंड ऑन राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ पाई प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ पाई एंड डिवाइडेड बाय h. ये डेफिनेशन है फर्स्ट प्रिंसिपल का. एंड नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ f of pi plus h and minus of this f of pi. So here this limit of h tends to 0, f of pi plus h value is minus of pi plus h into sine of h and minus f of pi, value of f of pi 0 and divided by h. And therefore the value of f dash of pi is equal to, f dash of pi is equal to this limit h tends to 0, limit of h tends to 0, then minus pi plus h into sin h and divided by h. And here this sin h by h is 1, so limit of h tends to 0, this minus of pi plus h in one bracket and into this sin of h, means limit of h tends to 0 sin of h divided by h, means limit of fx into gx is limit of fx into limit of gx. तो हमने इसको सेपरेट कर दिया दो फंक्शन में. एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h, सो माइनस ऑफ पाई प्लस value of h is 0 and into limit h tends to 0 sin h by h is 1, so answer is minus of pi. And therefore the value of f dash of pi is equal to minus pi for the value of function x into sin x. So this value is for the function x into sin x by using first principle, but is the value of f dash of pi, not फॉर द वैल्यू x डैश ऑफ x. जैसे प्रीवियस हमने जो क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी प्रूफ किया है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस f डैश ऑफ x इज, सपोज यहाँ पे हम ले रहे हैं कि f ऑफ x का गिवन वैल्यू है x इंटू साइन ऑफ x, एंड वी नो दैट व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन इसका डेरिवेटिव होता है f डैश ऑफ x, जिसे हम बोलते हैं dy बाई dx. एंड ऑन राइट हैंड साइड this derivative means d dx of x into sin x using product rule is first is x into d dx of sin x. So first into derivative of second, sin का derivative होता है cos x plus second is sin x and into derivative of x means first function is 1. So answer is x into cos of x plus sin of x. ये वैल्यू है f dash of x का जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी किया है. But if we replace this x by pi, and therefore we can say that f dash of pi on left side, so on right hand side pi into cos of pi plus sin of pi. And we know that the value of this cos of pi, जैसे यहाँ पे हमें पता है कि ये pi है, यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो -1 and 0 होता है, and this value is for cos, second is sin. So value of cos of pi is -1, so cos of pi is -1 and this sin of pi is 0. So the multiplication of pi into -1 is minus of pi and plus 0 is the value of f dash of pi and value is minus pi, जो हमने ऑलरेडी प्रूफ किया है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. बट यहाँ पे हमने यूज़ किया है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल एंड देन रिप्लेस x बाय पाई. तो ये एक डायरेक्ट मेथड है जो हम यूज़ कर सकते हैं जब भी क्वेश्चंस होगा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन. बट हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू और डिफरेंशिएट दिस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स बाई यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव. तो इसे फिर हमें डिफरेंशिएट जो करना है वो बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है वो लेके ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये दो मेथड्स हैं, दोनों का आंसर सेम आता है, बट क्वेश्चंस है ये फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ डेरिवेटिव. We have already studied the differentiation of some function by using the first principle of derivative and also the continuity of the function at some point. But now we have to study some important part, that is
right hand derivative and second is left hand derivative, and we have to check this right hand derivative and left hand derivative at certain point. So before that we have to study the standard definition of this left hand derivative and right hand derivative. And here first definition is right hand derivative. In right hand derivative, suppose we have one function, means y is equal to some function, is a real function, because functions are different types of functions. When we have to take the function is a real function, and if y equal to fx is the real function and a is any real number, then we use one definition, limit h tends to 0 positive of f of a plus h minus f of a divided by h, like first principle of derivative. But here we take h tends to 0 positive, and we know that when any point for 0, if value is positive, then value is on right hand side values are positive, and left hand side values are negative. So here for right hand derivative, consider limit as h tends to 0 positive and f of a plus h. A is any real number and h is a small increment, and minus f of a by h is a definition, and if it exists is called as the right hand derivative of fx at certain point at x equal to a. And this definition is denoted by r of f dash of a. In first principle we denote this as f dash of a, but here before f dash of a we write as r stands for right hand, means r of f dash of a, or simply we can define or denote is f dash of a plus, or this plus on power means f dash of a positive. But from now onwards we use this symbol f dash of a positive to represent the right hand derivative. तो इसके बाद यदि हमें राइट हैंड डेरिवेटिव यूज करना है तो इसका जो सिंबल होगा वो होगा f dash of a positive and is equal to limit of h tends to 0 positive f of a plus h minus f of a divided by h. And like that, second definition is left hand derivative is same, function is a real function, means y is equal to fx is a real function and a is any real number, then this limit h tends to 0 negative, because we take values from left hand side, and then limit is h tends to 0 negative, then f of a plus h minus f of a by h, and if this definition is exists, it is called as left hand derivative of fx at certain point x is equal to a, and it is denoted by f dash of a negative, or L of f dash of a. L stands for left hand of this function f dash of a, or f dash of a minus, or f dash of a to the power negative, and here onwards we use f dash of a negative. तो इसके बाद अभी जब भी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको डिनोट होगा f dash of a negative to represent the left hand derivative. So students, here we have studied the two definition, left hand derivative and right hand derivative. So simply left hand derivative is denoted by f dash of a negative and right hand derivative is f dash of a positive, and definition is same for left hand and right hand. Only difference is in right hand this limit h tends to 0 positive on right hand and limit h tends to 0 negative on left hand, and rest of the definition is same as in the definition of first principle of derivative. And this important note, if the value of this f dash of a positive and f dash of a negative are equal, means when we take f dash of a positive is equal to this definition and solve by using the method of limit, and we get one answer, and second is f dash of a negative, means f dash of a negative is equal to limit h tends to 0 negative f of a plus h minus f of a by h, and again solve by the method of limit and we get answer. Then both the answer is equal, f dash of a negative and f dash of a positive both are equal, then this function fx is said to be differentiable at x equal to a. Means function is differentiable when this f dash of a positive and f dash of a negative are equal, means their right hand derivative and left hand derivative are equal, then the function is differentiable. So here
there are the two definitions, f dash of a positive and f dash of a negative, but these definitions are same as first principle of derivative, and that two definitions are definitions of continuity, and these are the two topics. One is continuity and second is differentiability. So we have to study the relationship between the continuity and differentiability is very important. So in the next lecture we will study this relationship between the continuity and that differentiability in detail.